Hello everyone, my name is Abhinav Negi and I am the founder of Kalpavriksha Sustainable Development Society. The philosophical root of the name of this organization comes from the Indian mythology, where Kalpavriksha is a tree under which anyone who wish anything, his or her dreams comes true. That's why we name it Kalpavriksha. This year we have targeted our intervention to a specific target group. So we aimed at the high school meritorious students and we organized this program called Digital Catalyst Program. Thanks for inviting me for this workshop, which is named as Mind, Brain and Universe. So we provided them virtual reality, we provided them some of the neuroscience understanding how their brain works, what are the cognitive processes, how they can learn faster. We had a very intriguing experiment, which is human-human interaction. We used to, we kind of recorded muscle signals and we converted them. Kalpavriksha has done a very genius job and they are constantly providing these kind of programs to rural adolescent population, making them comfortable with the technology, making them utilizing the technology, applying the technology for their own benefits, as well as think beyond the boundaries, looking for more visionary projects. So that is something which is very exciting to know, and I am feeling glad to know about this and becoming part of this initiative. मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि डिजिटल कैटलिस्ट का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों से आए हुए बच्चों को जो हमारी नई प्रौद्योगिकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन लर्निंग है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें लेक्चर्स दिए जा रहे हैं विशेषज्ञों द्वारा। और जो भी ट्रेनर हैं यहाँ पे जो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और मैं सौड़ा सरोली से हूँ। यहाँ हमें कोडिंग, एआई एंड न्यू स्किल्स बहुत ही फन और इंटरेक्टिव वे में सिखाया गया है। यहाँ आके समझ आया कि हम कैसे टेक्नोलॉजी से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और हम कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेजिडेंशियल कैंप लड़कियों के लिए बहुत ही सपोर्टिव और सेफ है। पहले मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को डिजिटल कैटलिस्ट प्रोग्राम में हिस्सा बनने का मौका मिले, ताकि उत्तराखंड के रूरल एरिया से भी लड़कियाँ आईटी और टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे जा सकें। ये सिर्फ सीखने का ही नहीं, अपने आप को पहचानने का एक सफ़र है। It's been 2 years since I joined this organization, and every boot camp feels like, be it day scholar or residential, feels like an unprecedented experience. As I was interacting with these students every time with different mindsets, my paradigms really broadened.